अरे उधर बारिश गिर रहा है क्या? हाँ अरे हाँ यार, ये देखना उड़ती नहीं। अरे One world, one ride. Good morning guys, today we are going to go to Chichen Itza. Chichen Itza, as I told you, is one of the 7 wonders of the world, and the time taken would be 3.25. So arrival time is 12:19 दोनों भी okay, both are coordinated well, so that's nice. क्या बड़ा फ्लैग है यार। हाँ। ये तो सबसे बड़ी विशेषता शाम को उतरता है, इससे अच्छी बात क्या है? हाँ हाँ तो मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं। हाँ, अपना ऐसा इंडिया का फ्लैग अपना वो सीलिंग पे है, मालूम है, इतना ही बड़ा। हाँ, अभी तो इंडिया में ऐसा बहुत सारी जगह पे होते हैं, बहुत जगह पे बड़े बड़े फ्लैग। कपड़े बेच रहे रे। यहाँ पे कुछ हो गया। ये देखिए पिरामिड चिचिन इत्जा, भाई इसको रात में अच्छा दिखने लगता है, लाइटिंग वाइटिंग करते होंगे इन लोग। So we fueled up and I had a coffee and we are all ready to go. This was a short break. We have done around 100 kilometers from now till now, I think, and 177 more to go. And the weather is very, very hot. It's just like India. I hope our tires make it to Panama City. तेरे को एक बात बताऊं, और एक अपन खाली दोनों ओनली इंडियन रहेंगे राइडर्स। हाँ। जो ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला वंडर ऑफ द वर्ल्ड में ना, हाँ, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं इंडियन। तो ऐसे बहुत राइडर लोग गए होंगे क्योंकि है ना, लेकिन ऐसे मतलब मैक्सिकन राइडर गए होंगे। मेरे को तो डाउट है कि इंटरनेशनल कोई बाहर का नॉन मैक्सिकन मोटरसाइकिल पे गया भी हो, क्योंकि मैं जितना भी देखा हूँ ना, ये लोग ऐसे को ऐसे नीचे का नीचे वनटास ले लेते हैं। मतलब वो वहाँ से बाहर कैलिफोर्निया आया, मजाटलान आया और डिस्काउं करके बाहर। माचू पिचू बहुत जन गया, माचू पिचू तो हर एक राइडर जाता है। अरे बाप रे, बारिश क्यों कहाँ से? 15 मिनट में पहुंचेंगे। 15 मिनट, ठीक है। हाँ, 15 मिनट में अराइवल है टू द डेस्टिनेशन।
अरे उधर बारिश गिर रहा है क्या? हाँ, टोल तक बारिश। जोर से बारिश गिर रहा है ना? हाँ, टोल तक है शायद बारिश, फिर नहीं मिलेगा। अरे हाँ यार, ये देख ना, उड़ती नहीं। हाँ, अरे कोई कुछ देखा मेरे को, ऐसा लग रहा कोई सवाल चालू कर दिया वाला सडन। हाँ, अब नहीं दिखेगा। अभी बोलो यहाँ से नहीं आता कि और कितना पैसा देने का? चल मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो अपने को इधर ही जाने का। फर्स्ट टोल है ना डीजे? हाँ, इधर ही साइड में लेकर रोकता हूँ मैं। So it was raining pretty heavy, so we pulled over in the toll. But then it was only 9 kilometers. I think we can make it till there. खाली 9 किलोमीटर है। बारह मिनट में हचक के पानी गिरा तो पूरे गिर ले। अगर ऐसे चिल्लर पार्टी रहा तो पहुंच जाएंगे। पानी ही आगे तक। अपने को तो है ना बॉस, कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ पे ऊपर वाले ने गीला नहीं किया है। हाँ, माया प्लेनेटोरियम 600 मीटर 600 मीटर पे। 600 मीटर पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। आज से तो अंदर जंगल में ही होगा, फॉरेस्ट लॉज ही नहीं सकता। राइट साइड में। हाँ हाँ, ये देखिए कुछ तो है इधर, ये है ना विलास। हाँ ये आर्कियोलॉजिकल आज एंट्राडा। अच्छा डीजे, so we have reached Hotel Villas Archaeologicas Chichen Itza. Okay, me and DJ Bhai are going to see the one of the seven wonders of the world. That is Chichen Itza. हाँ डीजे, हाँ, हाँ हिंदी में जरा ठोको ना। बस चिचेन इत्सा जा रहे हैं। लेकिन संसार के 7 आश्चर्य, नए 7 आश्चर्य में से एक। नए साथ, that's a new. Old was something else, new is something else. Anyways, so let's check it out. So if you clap here, it echoes. DJ, एक ताली बजाना। थोड़ा इको होता है। I don't know, बढ़िया। This is the arena where the games used to happen.
What was the game? There was a ball. There was a ball which they used to play it as like a volleyball. They used to play it with their hips, elbow, and I think head. And what you see the ring up there? I know. Yeah, this ring. This ring. अगर सामने वाला टीम का अगर बॉल वो रिंग के अंदर गया मतलब you know your team is dead. So if my opponent scores in my team, then I am dead. It was like that. So that was the game. I don't know why they have to kill each other, but then so that was the game at that time. So that's why that where is the ring? Yeah, this one. Oh, I'm pointing it right. Yeah, ting ting, that ring. So that ring is, and you have it on the other side also. Behind me, that one, that place was the referee's counter, and this place was the main dignitaries or the priest or the king, important people used to sit there and watch the game. Now I just heard this guide saying that the winner's head is to be lost. And why would anybody win? I don't know. I don't know. There's a confusion. But somebody dies. One of them, winner, loser, somebody dies there. Okay? And it is said that snake is not the sign of evil, but it is a sign of fertility. So it is a good sign. So Mayan religion, it is said that in Mayan, snake is very, how do you say, pious. Yes. This is a very important place where this was the source of drinking water and lot of ceremonies were done here. So as you can see, nice.
finished the tour. It was a lovely place, mesmerizing. So much photographs to be taken, and I really did enjoy the place. No wonder it's one of the 7 wonders of the world. So this was the second. Third will be Machu Picchu. Tomorrow we will be right to Playa del Carmel. Distance is around 300, 200, 300, and let's see. Right now I just had a massage after that, and now we'll go off to sleep. So to all the lovely people who are watching this video, stay blessed and bye-bye. One world, one ride. So this is an adventure theme park which we are going, and let's explore.